It's a crime thriller and it keeps you on edge throughout. मतलब इतनी बढ़िया बुक है ना ये सीरीज ही इतनी सारी बढ़िया. दिस गर्ल राइट हियर दैट यू कैन सी ऑन द कवर के this lady, the girl with the dragon tattoo, she is amazing. मतलब भाई लड़की, मतलब she is my favorite. Okay. Hi, hello, hi. We are going to talk about this, like right now. I urgently, like literally just want to talk about this one. I am not over it. I'm just not over it. So, let's dive into it. What do we have here? Okay, so I'm really sorry, but I'm shooting this with the front camera. So I'm gonna read it out for you. It says the girl with the dragon tattoo. No, sorry. It says the girl who played with fire, which is the second part of the millennial series of the girl with the dragon tattoo by Stieg Larsson. I'm not really sure I'm pronouncing the name of the author very correctly. I think it should be pronounced as Stieg Larsson, but let's not talk about that. Let us talk about this book, the story and the plot. Okay, just give me a second. I think okay, मुझे याद है ऐसा कि मैं घर से द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बुक अपने साथ लेके आई थी टू कीप ऑल माई बुक्स इन वन प्लेस, बट इस वक्त वो मुझे मिल नहीं रही है कहीं पे भी. सो आई एम नॉट रियली श्योर एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने किसी को वो पढ़ने के लिए तो नहीं दी थी और मैं भूल गई हूँ कि मैंने किसको दी थी. Little panic attack, but we'll look into it. Before that, we'll look into it where it is. Now, I really would like to talk about this book, and I do noted down a few points that I would be talking through in the video. यार मैं खुद ही भूल गई. तो मैं कहाँ कितनी चीजें मैं ऐसे लिख के ना बस भूल जाती हूँ. Okay, yes, we will be talking about first point, just a preview. Then we'll talk about the plot. Then we'll talk about the characters. Then we'll talk about the story, and then we'll talk about the plot twist. And then we'll summarize it up. Okay, सबसे पहले book review. I love this book. I just love this book so much. Okay, first of all, it's जिन्होंने लास्ट जो बुक रिव्यू मैंने किया था इस सीरीज का, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे कहीं पे तो मिल ही जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल मेक श्योर कि मैं रिव्यू मतलब लिंक जो है उस वीडियो का ध्यान से डाल दूँ इफ़ यू वांना गो थ्रू इट. मैंने रिव्यू किया हुआ है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बुक का, एंड ये सेकेंड पार्ट है उस बुक का. इट्स अ क्राइम थ्रिलर एंड इट कीप्स यू ऑन एज थ्रू आउट. मतलब इतनी बढ़िया बुक है ना ये सीरीज ही इतनी सारी बढ़िया. दिस गर्ल राइट हियर दैट यू कैन सी ऑन द कवर के this lady, the girl with the dragon tattoo, she is amazing. मतलब भाई लड़की, मतलब she is my favorite. Okay, the character, मतलब इसका जो appearance दिखाया गया है बुक में, like जो physical appearance इसकी describe की हुई है, I'm not very attracted to that. I'm not very approving of that kind of physical appearance, but her personality, bro, her personality, she just kills it. She just literally kicks it out of the box every single time. Like, she is amazing. She is a gift of God and we should embrace it. Okay, first we're gonna go with the preview. दिस बुक. ओके, फर्स्ट बुक में हम क्या देखते हैं कि जो स्टोरी होती है प्रोसीड करती है फ्रॉम
लिज़बेथ सैलेंडर एंड माइकल ब्लूमविस्ट, जो इस कहानी के जो दो मेन किरदार हैं, जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो है लिज़बेथ सैलेंडर एंड माइकल ब्लूमविस्ट, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग दैट राइट. उनकी मतलब दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ मर्डर मिस्ट्री टुगेदर, जो एंड में सॉल्व हो जाती है. बाय द वे द प्लॉट ट्विस्ट वाज अमेजिंग. आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. इट वाज लाइक मुझे लाइक उस बुक का ना, फर्स्ट बुक का जब मैं पढ़ रही थी ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, जब मैं उसका प्लॉट ट्विस्ट जब आने वाला था, उससे पहले मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ये माइट भी प्लॉट ट्विस्ट इसका हो सकता है. एक आइडिया हो चुका था. बट स्टिल जब वो प्लॉट ट्विस्ट हुआ ना, मुझे इतना एक्साइटमेंट और इतना मतलब ऐसा लगा यार, मतलब धुएं उड़ा दिए इन लोगों ने प्लॉट ट्विस्ट के साथ में. उसके बाद ही दिस बुक कम्स. ओके, नाउ इस बुक में क्या होता है कि स्टोरी जो होती है आगे प्रोसीड कर रही होती है. इसमें क्या हुआ है कि एक कपल है जर्नलिस्ट का, जिनका मर्डर हुआ है, एंड उस मर्डर की जो मिस्ट्री चल रही होती है वो पूरे थ्रू आउट द सॉल्व हो रही होती है कि मर्डर किसने किया है, और जिसने किया है उसने क्यों किया है, मोटिव क्या है. नाउ इसमें स्टोरी में ये होता है कि कातिल बहुत सारे हो सकते हैं, मर्डरर काफी सारे उनके पास वो हैं सस्पिशंस कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन जो मोटिव है वो लाइक क्लियर नहीं हो पाता कि मोटिव एग्जैक्टली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या हो सकता है. जो लोग सस्पिशन के अंडर है उनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है, या फिर जिनके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है वो सस्पिशन के रिगार्ड के अंदर नहीं आ पाते हैं, and this and that. But somehow Elizabeth got under the suspicion radar. मतलब सस्पेंशन जो होता है उनके ऊपर, एलिजाबेथ के ऊपर हो जाता है कि भाई ये मे बी हो सकती है विद सर्कुलेटिंग थ्रू सर्कमस्टांसेस, एंड कुछ लाइक 1+1 2 करके, मतलब ऐसे हो जाता है कि वो सबको ऐसा लगता है दैट शी इज द मर्डरर. नाउ अब ऐसे क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये तो बुक पढ़नी हो रही है. मैं बिल्कुल भी कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ. नो. नेक्स्ट तो ऐसे स्टोरी प्रोसीड करती है, और जो होता है थोड़ा बहुत इसमें मतलब क्या होता है कि एलिजाबेथ का जो पास्ट रिलेटेड होता है, जो भी उसका जो पास्ट होता है, जो फर्स्ट बुक में बिल्कुल भी इतना ज्यादा रिवील नहीं किया जाता है, वो इस बुक में किया जाता है. इस बुक में उसकी पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज बाहर आती हैं, और उस पास्ट को रिलेटेड लेके सारी चीजें प्रोसीड कर दी, इंक्लूडिंग द मर्डर, वन आफ्टर अनदर, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, सो द स्टोरी गोज ऑन लाइक दैट. That was just the preview for this book. Now let's coming to the plot. भाई देखो, प्लॉट तो ना मतलब इस पूरी सीरीज का ही प्लॉट लाइक दी फेवरेट है मेरा, लाइक दी फेवरेट, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री. फर्स्ट बुक मर्डर मिस्ट्री, सेकंड बुक मर्डर मिस्ट्री. फर्स्ट बुक में दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, जो है ब्लूम माइकल के साथ में मिलके एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, बट एट द सेम टाइम उन दोनों की अपनी साथ में अलग अलग सेपरेट स्टोरीज चल रही होती हैं. Same goes for this book. Elizabeth has one story going on, and then there is another that is interlinked with her. But इस book की starting में जो from like starting में जो 1 or 2 chapters हैं, like 1 2 3 जो chapters हैं, उसमें Elizabeth के लिए एक plot set किया हुआ है. When the book proceeds, Elizabeth की एक स्टोरी चल रही है जिसमें वो मर्डर हुआ है, एंड शी इज द like the might be the culprit, like the presumed culprit, and then there is Michael who is trying to help her, and like this and that, whatever the thing is कि like story go on कर रही है. तो एक स्टोरी वो चल रही है, प्लस Elizabeth का जो है पास्ट वो एक्सप्लोर किया जा रहा है. बट इन द स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग है बुक की, जहाँ पे एलिजाबेथ की स्टोरी शुरू होती है फ्रॉम लाइक वेयर दे लेफ्ट इट, लाइक जहाँ पे फर्स्ट बुक में स्टोरी एलिजाबेथ की स्टोरी को छोड़ा जाता है टू बी कंटिन्यूड के लिए, ये वो जहाँ से शुरू हो रही है वहीं से शुरू हो रही है उसकी स्टोरी. लेकिन इट्स द फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स में जो उसकी स्टोरी है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू द स्टोरी दैट गोज ऑन थ्रू आउट द बुक. मतलब लाइक फर्स्ट बुक में भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा था, बट सेकेंड बुक में इट्स लाइक कि इनिशियल चैप्टर्स में एक अलग ही प्लॉट सेट किया गया, विच डज नॉट गेट कंटिन्यूड इन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. रेस्ट ऑफ द स्टोरी गोज थ्रू आउट अ डिफरेंट प्लॉट.
तो लाइक फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स में उसके बारे में मतलब दिखाया कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, किन लोगों से वो मिल रही है, एक दो जो इंसिडेंट्स हुए वो थोड़े वियर्ड थे, थोड़े अजीब थे, और मैं थ्रू आउट द स्टोरी वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो पार्ट कहाँ आएगा, वो पार्ट जो दिखाया मतलब जो शुरू में वो पार्ट है वो इंक्लूड कहाँ किया जाएगा. तो आई थिंक आई हैव एन आइडिया कि वो जो पार्ट है वो थर्ड बुक में कंटिन्यू किया जाएगा, बिकॉज प्लॉट सेट हुआ था. शुरू में पढ़ते हुए बहुत कंफ्यूज हो गई मैंने कि ये तो स्टोरी मतलब कहाँ ही जा रही है, पता भी नहीं चल रहा. तो इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा लगा मैंने कि यार ये तो. बट सेकेंड बुक का जो प्लॉट है वो यही है दैट देयर इज अ कपल हु गेट्स मर्डर इन द बिल्डिंग एंड लिज़बेथ इज द प्रिज्यूम्ड मर्डरर एंड माइकल जो है वो उन जर्नलिस्ट का फ्रेंड होता है, उसको उस मर्डर के बारे में पता चलता है एंड दे गो ऑन प्रोसीडिंग विद द होल पुलिस एंड दिस एंड दैट एंड क्राइम एंड गैंगस्टर्स एंड गैंग्स, everything gets involved into this and it's perfect. I cannot say anymore. Next, proceeding towards the character. Okay, I'm gonna name the characters right here. Elizabeth Salander, of course. Michael Bloomquist, male and protagonist. Ronald Neimer. Okay, this is like I read the entire book and I still cannot pronounce the name. So, Erica Berger, Niels Bergerman. No, sorry, Niels Bergerman. They are Scottish names. So, Dag Savson, Alexander Zalekino. That is the name you wanna encircle right there. Alexander Zalekino. You need to red circle that name. Holger Palmgreen, Dragan Armansky. Yeah, Dragan Armansky since Dragan Armansky is in the story since book 1 and he still hasn't played any kind of prominent role so far and he's literally, I'm so intrigued by him and I'm so interested in his character and literally want to know more about his character and his relation to Elizabeth basically. मतलब बहुत सही chemistry दोनों की, मतलब not in like that sense but like why he is not prominent in the story so far. मतलब like he is there but he's not playing any kind of like major plot twisting kind of role. So I really want to see him in the third book, like more of him. Then we have Mariam Wu and then Mia Birchman. Okay. These are the characters. So इस वो जो सेकेंड बुक है इसमें ये सारे जो हैं जो लाइक कुछ एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि मतलब लाइक इन द मेजर लीड दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स. All are interlinked with each other somehow and every character is well written, every character is well justifies with their roles and just like the characters are justifying their stories respectively. Then we come to the story. देखो स्टोरी के बारे में आई थिंक मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ बट जो थोड़ा बहुत मैं एक ओवरव्यू से देना चाहूंगी वो ये होता है कि जो दोनों जर्नलिस्ट होते हैं वो माइकल के साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं ओवर अ स्टोरी रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग. दोनों का मर्डर हो जाता है एंड समहाउ लिज़बेथ इज इंटरलिंक्ड विद द मर्डर. कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें शी इज वेल फिटेड इन द सिचुएशंस कि वो ही मर्डरर हो सकती है. देन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस and we all know how it works out with the police things, you know, like good cop, bad cop, someone is trying to do their job, someone is trying to earn money, someone is under pressure. Plot twist इतना बढ़िया है इस बुक का भाई. The Girl Who Played with Fire, this one, जितने भी पॉसिबल प्लॉट ट्विस्ट मैं सोच सकती थी कि ये हो सकता है वो हो सकता है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स. लिटरली एवरीथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स. या प्लॉट ट्विस्ट इतना सही था ना, इतना सही प्लॉट ट्विस्ट. मैं ना बुक ऐसे पढ़ रही थी, लाइक ऐसे पढ़ के
मैंने उसको ऐसे बंद किया है. The moment I read that sentence, I was like, yes, if you really are into murder mystery, this one is definitely for you. And I'm going to summarize it. The next जो इनका वो है installment है, the third part of the book that I have right in here, The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. This one right here by Stay Larson. The most original heroine to have emerged in crime fiction for many years. Body-tonking independent. Of course, I agree with you. I definitely am going to agree with you. I really want to read this, but क्योंकि crime thriller है और क्योंकि मैं मतलब थोड़ा ऑफकोर्स थोड़ा जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो माइंड में हो ही जाती है, तो मैं अभी थर्ड पार्ट रीड नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि अब मैं मतलब बहुत टाइम हो गया, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मुझे लाइक 4 महीने 5 महीने हो चुके होंगे जब मैंने ये फिनिश करी थी पढ़नी जब मैंने ये लास्ट फिनिश करी थी, तो बट स्टिल अभी तक मैं थर्ड पार्ट तक पहुँची हूँ और मैं अभी थोड़े टाइम के लिए शायद नहीं पढ़ने वाली हूँ फिफ्थ पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है, सॉरी, because right now, as usual, the kind of nerd I am, एक सेकेंड, हाँ, जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी थी वो थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक. सो जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ उसके बाद मैं एक हैरी पॉटर की एक बुक पढ़ती हूँ. Weird logic, weird reason, but whatever it is, I am not changing that one. So right now I am reading the fifth part, the Order of the Phoenix, Harry Potter Part 5th, and I am currently on the chapter of Professor Umbridge. That bitch. So I'll see when I will be reading it, but so far this one is it. If you really are into murder mystery and stuff, please read The Girl with the Dragon Tattoo and you can proceed to this one, and then again and again. And there are 7 parts of this book. I am on I finished 2 and I'm going to be 3rd very soon. So I definitely would recommend this one for all the crime thriller lovers out there. This is literally the most amazing and the most wonderful book you're ever going to read. So that was all for the summary. That was all for this book talk. That was all I have to say about this. I mean, I can literally talk for like hours about this book and any book I have ever read. But we are going to finish this one right off here because I do not have any more points left to discuss with you. I've done all them. So I hope you liked the video. And if you're a book lover and you do have any more suggestions for any other murder mystery books, so do let me know in the comment section because I love reading murder mysteries. So my bookworms, and be safe, be healthy. Lots of love to you, lots of love to me, and bye. Take care.